dignitaries have joined us and graced us on this lovely occasion. I would now request the CEO, AMNS India, the senior gentleman with an experience of more than 3 decades in steel industry, Mr. Dilip Oman, to please welcome us all formally with a lovely smile. हमारे सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है और इस शुभ अवसर पर मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सीईओ एएमएनएस इंडिया मिस्टर दिलीप ओमन जी से कि वो मंच पर आए और स्वागत वचन से सबका स्वागत करें। नमस्कार, केम छो? Konnichiwa for our Japanese colleagues. Good afternoon and a warm welcome to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, and Honorable Chief Minister, Shri Bhupendra Patel ji, who had a very busy schedule, but he opted to come and attend this program. Shri C.R. Patil ji, the State BJP President. I also want to extend a warm welcome to Kunihuko Kawazu-san, Minister and Deputy Chief of Mission, Embassy of Japan in India. Your presence means a lot to us. We are also delighted to have all the other dignitaries on and off the dais, some physically, some virtually, from the central and state governments, including officials from the Surat District Administration, as well as so many of our valued customers, partners, and suppliers. We appreciate your being with us. Thank you also to AMNS board members, executives from the parent companies, and employees who join us online and without whom this day would not have been possible. In 2019, ArcelorMittal and Nippon Steel, two of the world's steel industry leaders, collaborated to acquire an asset in India amid immense hope and expectation. What a remarkable journey this has been, despite numerous headwinds. We have grown from strength to strength. We have acquired connected assets to support our supply chain and strengthen operations. Our downstream expansion, which is ongoing in India, in Hazira, is focused on building a state-of-the-art facility producing import substitution products. Our foray into renewable energy reinforces our firm commitment towards leading the decarbonization efforts of the steel industry in India. And today, we embark upon another remarkable undertaking. This ceremony today marks our commitment to partner in India's growth story and vision of Honorable Prime Minister for a $5 trillion economy. Our plan to expand production capacity to 15 million tons per annum in phase 1 here at Hazira is in full alignment with India's national steel policy, master projects such as Make in India and Gati Shakti, and it keeps safety, sustainability, and our communities at heart. Atmanirbhar Gujarat
propelling Atmanirbhar Bharat. Yet as we grow, we will not slacken our unshakable commitment to ensuring the highest standards of safety, governance, and growing sustainability. We will remain models of responsibility, integrity, and probity. Thank you again for being with us for this special occasion. Thank you so much. Thank you so much for welcoming each and every one with that welcoming applause and those words of motivation and encouragement. आज AMNS इंडिया के भूमि पूजन के शुभ अवसर पर हमारे साथ मौजूद है गुजरात के वरिष्ठ मुख्यमंत्री जो गुजरात की नींव को विकास की ओर लेते जा रहे हैं दिन ब दिन माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी. And I would request Executive Chairman ArcelorMittal and Steel Tycoon Shri Lakshmi Mittal ji to please welcome our Honorable Chief Minister. साथ ही में हमारे साथ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा वाइस चेयरमैन ऑफ मॉनिटरिंग एडवाइजरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी सूरत गुजरात बीजेपी प्रेसिडेंट महत्वाकांक्षी और उमंगी ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री CR पाटिल जी. And I would once again request Shri Lakshmi Mittal ji to please welcome him. Moving ahead, we have a special message, greetings from Mr. Takahiro Mori, Executive Vice President, NSC and Member of Board, AMNS India. And let's have a look at his video message, the greetings and good wishes that he has shared. 日本国経済産業大臣の西村康稔です。AMNS インディアによるハジラ製鉄所の拡張プロジェクトの加え入れ式にあたり、一言ご挨拶を申し上げます。インドの経済成長と伸び続ける鉄鋼需要に対応するため、日本最大の鉄鋼メーカーである当時の新日鉄住金が世界規模で展開しているアルセロルミッタルと共同で AMNS インディアを設立してから3年が経過しました。ハジラ製鉄所の拡張プロジェクトは当時安倍総理からモディ首相にもお伝えした通り、日印の絆を一層確かなものとするまたとない機会であります。AMNS インディアが順調に事業を発展させ、本日拡張プロジェクトの加え入れに至ったことを大変喜ばしく思います。私自身もインドはこれまで何度も訪問しており、2018年には官房副長官として安倍元総理とご一緒してインドを訪問しました。また日印友好議員連盟事務局長としても日本とインドの関係強化に努めています。今年は日印が国交を樹立して70年の節目の年です。本年3月には岸田総理がインドを訪れ、モディ首相との間で日印特別戦略的グローバルパートナーシップをはじめ、日印関係のさらなる深化に向けた協力を確認いたしました。そのような中で実施されるこのプロジェクトは、まさに日印経済関係の緊密化の象徴であるとも言えます。鉄鋼産業は自動車をはじめ、幅広い産業のサプライチェーンを支える重要な基盤産業であり、国家の成長発展に欠かすことはできません。一方で、
気候変動問題が深刻化する中、鉄鋼産業においても脱炭素化は喫緊の課題となっております。こうした中で、世界第2位と第3位の鉄鋼生産国であるインドと日本が、経済成長と脱炭素化を両立するため、共に鉄鋼産業が直面する課題解決に向けて協力していくことは極めて重要であると考えます。来年は日本が G7、インドが G20 を開催いたします。鉄鋼産業を抱える課題を含め、日本とインドで国際社会での議論をリードし、課題解決に向けた国家間の協力を推進していきたいと思います。最後に改めてこのプロジェクトの成功をご記念申し上げます。ありがとうございました。With those words of encouragement, that was Mr. Yasutoshi Nishimura, Minister of Economy, Trade and Industry, Japan, sharing his joyous feelings with us over here. Moving up next, we have Mr. Kunihiko Kawazu, Chargé d'Affaires at the Interim Embassy of Japan in India. And may I request, sir, to please join us and share a few words with us. Shri Narendra Modi ji, Honorable Prime Minister of India, Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Chandrakant Pagnatat Patil, Honorable Parliament Member of India and BJP President of this great state, Gujarat, Sumit Darshana Jardosh, Honorable State Minister for Railway and Textile, Mr. Lakshmi Mittal, Executive Chairman of ArcelorMittal, Mr. Yasutoshi Nishimura, Minister of Economy, Trade and Industry, Japan, and the leadership of the Japan-India Friendship League of our Parliament, Mr. Takahiro Mori, Executive Vice President, Nippon Steel Corporation and Member of Board, AMNS India, Mr. Eiji Hashimoto, President, Nippon Steel Corporation. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaskar, Kemcho. I am so glad to be here today. My special thanks go to Mr. Dilip Komen, CEO MNNS India, and Mr. Ebina, the Managing Director in Delhi. They made possible my attendance today here. I would like to report to the leadership of this great company, AMNS India and ArcelorMittal and Nippon Steel, that the Managing Director Ebina is enthusiastically and very hard working in Delhi. Ladies and gentlemen, this year marks the 70th anniversary of the diplomatic relations between India and Japan. This March, Japanese Prime Minister Fumio Kishida paid an official visit to India. And in return, in May, Prime Minister Narendra Modi traveled to Japan to participate in the, so to say, Quad leaders meeting, Japan, US, Australia, India. Further, last month, September, Prime Minister Modi again visited Japan for participation in the state funeral for the former Prime Minister Abe. Ladies and gentlemen,
I would like to briefly touch upon the cooperation in the field of steel between two countries. The cooperation in this field between two countries is even older than our diplomatic relations. Nippon Steel started to the business with India in the 1930s, and since the year 2010, Nippon Steel has been strengthening the effort for local production in India. And this AMNS India is a significant project for our two countries. Since the stage of acquisition discussions, then Prime Minister Shinzo Abe sent a letter to the Prime Minister Modi, and our government has been committed to support this important project. ArcelorMittal and Nippon Steel Corporation, these two companies are the leading companies in this sector of steel, be it in technology, be it in quality. I believe that the support from these two leading steel companies will be very, very helpful for this AMNS India. And as a result, the projects of this AMNS India has been so far going very well. This March, the both leaders, Prime Minister Modi and Prime Minister Kishida of Japan, they agreed upon the shared goal of 5 trillion yen investment from Japan to India in coming 5 years. 5 trillion yen is equivalent to 3 lakh crore Indian rupees. Indian government, as you know, the motto of this government is Make in India, self-reliant India. And in this area of steel, there is an important policy objective, National Steel Policy 2017. I believe that the enlargement of these operations of AMNS India is pushing this national state policy of government of India. Ladies and gentlemen, our government of Japan, has been cooperating with the Indian Ministry of Steel in the field of quality control and energy conservation. 2 years back, December 2020, Japanese Economic Ministry, METI, and Indian Ministry of Steel concluded the Memorandum of Understanding for Cooperation. Building upon this MOU, this month, October, the first round of Japan-India Steel Dialogue was held. Our government of Japan will continue to cooperate with the Indian government towards the development of the Indian steel. In conclusion, I wish the AMNS India, ArcelorMittal, as well as Nippon Steel Corporation, the further development and growth. And I wish also the Gujarati people health and happiness from my bottom of the heart. Dhanyawad, thank you so much. ありがとうございました。Check. Thank you so much, Mr. Kunihiko Kawazu, on sharing various collaborative projects of AMNS India
sharing the journey of Nippon Steel, and we thank immensely to the government of Japan for providing us so much of support. Moving ahead, now we have the chairman of AMNS India addressing us on this momentous occasion. He has held various senior leadership roles, including managerial oversight of the group's flat carbon steel business in America and Europe, in addition to his role as CFO and membership of the group management board. He was named European Business Leader of the Future by CNBC Europe and was ranked 4th in Fortune magazine's 40 Under 40 list in 2011. An active philanthropist with a particular interest in child health, I now invite the CEO of ArcelorMittal and Chairman of AMNS India, Mr. Aditya Mittal, to please say a few words. Game show? Namaskar, good afternoon. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, we're incredibly honored that you have taken the time to share your wisdom with us on the occasion of this Bhumi Pujan ceremony marking the expansion of our steel-making capacities here in Hazira. Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, I would like to extend a very warm welcome to you and thank you for all the support you and your government has provided. Shri C.R. Patel ji, respected ministers, the Gujarat government, the Steel Ministry, the Environment Ministry, distinguished guests, and my esteemed colleagues from ArcelorMittal and Nippon Steel. I welcome you all to our ceremony here today. The ArcelorMittal Nippon Steel India family of employees and partners are immensely grateful for all of your support in making today a reality. I can remember very clearly the moment when we acquired this incredible facility, nearly 3 years ago. We have invested almost 90,000 crores and have made tremendous progress across many dimensions, ensuring the facility is world-class, operating safely at full capacity, and producing even more quality products. Simultaneously, we've been also working hard on our expansion plans to ensure our company can capture the potential for growth that is here in India. This will enable us to create tremendous opportunities and value for the people and the state of Gujarat. In pursuing this ambitious goal, we are squarely aligning with India's national steel policy, both in terms of technology and highly demanding products. As we grow, we plan to expand our specialty steel portfolio and focus on segments such as automotive, transportation, and renewables, harnessing the power of ArcelorMittal and Nippon Steel R&D capabilities on a global basis. We intend to invest a further 60,000 crores to grow the capacity from 9 million to 15 million tons and produce Thank you to you. And as we invest 60,000 crores, we will produce the world's most technologically advanced products. We are bringing technologies in steel making that have not existed in India. We're going to make products in India that have never been made in the country. A very good example of this high-quality steel is Magnellus that will be used for the new bullet train project. Prime Minister Shri Narendra Modi ji and the and tragically late Japanese Prime Minister Shinzo Abe laid the foundation stone for this bullet project in Ahmedabad in 2017. The first train is expected to run on a 50-kilometer section between Surat and Bilimora in 2026, and our steel will be on that train.
This is a great example of how we will be contributing to vital government initiatives such as Atmanirbhar Bharat. As an Indian citizen, I'm personally very proud that we're able to support India's people, policy, and economy in this way. Sharing my immense pride today is my family, who are also here. My two daughters, Sanaya and Rihanna, who have missed school to be here, my wife Megha, my mother, and of course, my father. As we start the expansion project, our first priority is to ensure the safety and the future of the people and the communities. Today is much more about their future than our business. Everywhere we go, we take the opportunity to reinforce the imperative of health and safety. Major expansion projects also bring considerable health and safety risk. So we must ensure that all the safety risks are thoroughly mapped out and managed effectively. This is our most important task. We are also aware of our deep responsibility towards our planet. Relative to other materials, and I'm not biased at all, steel is wonderful. It has a low carbon footprint, but on account of the massive volumes of steel used every year, it is also a big emitter. So steel must decarbonize, and we very much aim to lead the way in this process. As we expand, we will be investing to ensure the expansion has a lower carbon footprint, introducing new technologies to the site as they develop. We're also building the first round-the-clock renewable energy source that will be supplying power directly here in Hazira, further decarbonizing its footprint. And so in conclusion, I can confidently say that we are now well positioned to contribute to India's growth, to the well-being of our communities, to the safety of our people, and making steel that is climate-friendly, valuable, and relevant for all of our customers, big and small, for the breadth of this nation. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Aditya Mittal. Like he rightly said, we are all set to play a leading role in the decarbonization and development of the Indian steel industry. Thank you for throwing light on the future of steel industry, and of course, a warm welcome to all the family members of Mittal family. Thank you for making your presence over here. Moving ahead, we have the best wishes from our very own guest of honor, who heads the Ministry of Steel and is a member of Parliament, Sansad ke Sadasya, ek Bharatiya Rajneta, Minister of Civil Aviation, a youth icon, ek Yuva Pratik, Honorable Shri Jyotiraditya Scindia ji, Steel Minister of India. And can we please have a look at his message that he has shared for all of us today with the help of the video. देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेंद्र भाई पटेल जी, आर्सलॉरमित्तल के संस्थापक लक्ष्मी मित्तल जी, निपॉन स्टील के प्रतिनिधि दिलीप ओमेन जी, मंच पर आसीन महानुभाव और भाई और बहनों, मुझे बेहद खुशी है कि आज आर्सलॉरमित्तल निपॉन स्टील इंडिया के हजीरा इस्पात संयंत्र विस्तार परियोजना के भूमि पूजन समारोह पर मैं आप सबके साथ हूं। भारत में संचालन के 3 वर्षों के भीतर ही अपनी मेगा विस्तार योजना शुरू करना भारतीय इस्पात उद्योग के प्रति आपकी प्रतिबद्धता और अपनत्व को दर्शाता है। कंपनी की उद्यमशीलता की भावना और उत्कृष्टता के लिए जुनून प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। मैं सभी
आर्सलॉरमित्तल निप्पॉन स्टील की टीम के प्रतिनिधियों को और कर्मचारियों को अपने तरफ से बधाई देना चाहता हूं। हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया में आर्थिक और अवसंरचना विस्तार में इस्पात क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। स्टील बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक प्राथमिक कच्चा माल है। प्रमुख उद्योगों और पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने और राष्ट्र के समग्र विकास में इस्पात क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। भारतीय इस्पात उद्योग में पिछले दशक में अभूतपूर्व सकारात्मक बदलाव और परिवर्तन आए हैं। भारत सरकार की दूरदर्शिता के आधार पर, कानून और नियमों में बदलाव के आधार पर, निवेश हितैषी निर्णयों के आधार पर और आप सभी के अथक परिश्रम से यह साकार हो पाया है। भारत में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत 2013-14 के 55-56 किलोग्राम प्रति वर्ष की औसत से बढ़कर 2022 में 77 किलोग्राम आज हो चुका है और यह अनुमान है कि 2030 तक यह 160 किलोग्राम करीब तक पहुंच जाएगा और इसी गति से वृद्धि के अनुसार 2047 तक यह वर्तमान के विश्व औसत खपत 228 किलोग्राम से भी अधिक स्तर तक पहुंच जाएगा। भारत ने वित्तीय वर्ष 2022 में इस्पात उत्पादन की स्थापित क्षमता 50% बढ़ाकर 155 मिलियन टन कर दी, जो वित्त वर्ष 2014 में लगभग 100 मिलियन टन थी। 2030 तक 300 मिलियन टन वार्षिक इस्पात उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए हमें नए प्रौद्योगिकियों को और नए नवनिर्माणों को इन पर ध्यान हमें केंद्रित करना होगा। आपका योगदान इस लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण होगा। AMNS इंडिया हजीरा संयंत्र में अपनी इस्पात निर्माण क्षमता को वर्तमान 9 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर दी है। आपका योगदान इस लक्ष्य प्राप्ति में महत्वपूर्ण होगा। AMNS इंडिया हजीरा संयंत्र में अपनी इस्पात निर्माण क्षमता को वर्तमान 9 मिलियन टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 मिलियन टन कर रही है और आने वाले वर्षों में गुजरात और उड़ीसा दोनों में और बढ़ने की योजना है। 6,322 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के घरेलू उत्पादन के लिए प्रदर्शन से जुड़ी हुई प्रोत्साहित योजना भारतीय इस्पात उद्योग के लिए एक और महत्वपूर्ण पहल है। कोटेड और प्लेटेड स्टील उत्पादों, विशेष रेल, मिश्र धातु इस्पात उत्पादों और स्टील के तारों और इलेक्ट्रिकल स्टील के उत्पादन को बढ़ावा देने से यह कई क्षेत्रों में, चाहे व्हाइट गुड्स हो, ऑटोमोबाइल हो, तेल हो, गैस हो, परिवहन हो, पाइप, बॉयलर, ब्लास्ट फर्नेस, दूसरे कई उत्पादनों के लिए लाभान्वित जरूर ये निकलेगा। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का उद्देश्य कच्चे माल की सुरक्षा में सुधार, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाना, आयात निर्भरता को कम करना और उत्पादन की लागत को बेहतर बनना, ये हमारे संकल्प हैं। इसका उद्देश्य तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा इस्पात आयोग विकसित करता है, जो आर्थिक विकास को बढ़ावा दे, औद्योग की निरंतरता बनाए रखने और भारत के शून्य उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप हमें धीरे धीरे इस्पात क्षेत्र को कार्बन रहित बनने की ओर भी बढ़ना होगा। जब भारत
अमृत काल से शताब्दी काल की ओर बढ़ रहा है, तो व्यापार जगत के लिए वर्ष 2030 एक कार्बन उत्सर्जन में 30% कटौती करने का संकल्प लेने का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। AMNS इंडिया की मूल कंपनियां पहले से ही कम कार्बन प्रौद्योगिकियों का परीक्षण कर रही हैं और स्टील निर्माण को डीकार्बनाइज करने के रास्ते को विकसित कर रही हैं। इन तकनीकियों को और सर्वोत्तम प्रथाओं को भारत में स्थापित करने से केवल भारत के स्टील उद्योग की डीकार्बनाइजेशन की यात्रा में तेजी आएगी, बल्कि भारत के लोगों के लिए यह सीखने और विकास के अवसर भी प्रदान करेगा। यह विस्तार परियोजना गुजरात के 60,000 से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का गहरा प्रभाव विभिन्न उद्योगों पर दिखने लगा है। भारत के आर्थिक विकास के लिए हमारी सरकार व्यापार जगत के संग एक दूरदर्शी साझेदारी के रूप में काम कर रही है। औद्योग जगत को भी भारत की एक महाशक्ति के रूप में प्रगतिगामी परिकल्पना के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जब हम 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएं, तब एक भारत पूरी शक्ति से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मुझे यकीन है कि आपकी कंपनी कार्बन तटस्थता पर भारत की प्रतिबद्धता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IT आदि जैसे उन्नत तकनीकों को अपनाने में, कार्य क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने में, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने अंतर्राष्ट्रीय अनुभव से भारतीय इस्पात उद्योग को सशक्त और उन्नत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेरा विश्वास है कि विस्तार परियोजना की भूमि पूजन से लेकर उत्पादन शुरू करने में आप सब नया रिकॉर्ड स्थापित करेंगे। आप सभी को मेरी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। आपकी शुभकामनाएं, बधाइयां और आपके विश्वास के लिए हम आप सबका धन्यवाद करना चाहते हैं। આજના શુભ અવસર પર આપણી સાથે અહીંયા ઉપસ્થિત છે મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ લોકસભા સુરતની મૂરત બદલનાર સુરતી લાલાઓના લોક લાડીલા એવા શ્રી CR પાટીલજી, અને હું એમને નિવેદન કરું છું કે આપ શ્રી સભાને સંબોધિત કરે। ભારત માતા की સૌને દિવાળી અને નવા વર્ષની ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા। આજના કાર્યક્રમમાં આપણે ઉપસ્થિત આદરણીય શ્રી AMNSના ચેરમેન શ્રી લક્ષ્મી મિત્તલજી, આદિત્યજી, ગુજરાતના લોકલાડીલા મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલજી, અમારા સંસદના સાથી અને રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી શ્રીમતી દર્શનાબેન જરદોશ, राज्य सरकार मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल, धारासभ्य श्रीमती जंखनाबेन, जापान थी आवेला जेमनु नाम बोलવું अघरू है जरा એટલે, અને આદરણીય ડાયસ, અહીં ઉપસ્થિત સર્વે આમંત્રિત ભાઈઓ અને બહેનો, આજનો કાર્યક્રમ આપણા માટે, સુરત માટે, गुजरात माटे और देश माटे अत्यंत महत्वनो छे। लक्ष्मी मित्तलजी नु नाम घणीवार वांच्यो हशे, घणीवार सांभळ्यो हशे, पण आपणी धरती पर पग मूकीने आपणा अहींया आटलो मोटो प्रोजेक्ट करीने एमणे आपणा माटे तो एक महत्वनुं काम कर्युं छे। આપણું ગૌરવ તો વધાર્યું જ છે,
પણ સાથે સાથે ગુજરાતનું ગૌરવ પણ વધાર્યું છે. આદરણીય મોદી સાહેબ કહેતા હોય છે, વિકાસની વાત કરતા હોય છે ત્યારે ઘણીવાર વિકાસ એટલે શું? વિકાસ એટલે ફક્ત ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર નથી, પણ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઊભું કરવાને કારણે લક્ષ્મી મિત્તલજી જેવા લોકો પણ અહીં ગુજરાતમાં આવે છે. એમને અહીંયા ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો મળે જ છે, પરંતુ સાથે સાથે એક વાતાવરણ પણ મળે છે. નવી ટેકનોલોજી લઈને, નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લઈને, નવા આઈડિયાઝ લઈને એ જ્યારે આપણી ધરતી પર આવે છે ત્યારે એનું અનુકૂળ વાતાવરણ કરીને જે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે મુખ્યમંત્રીથી માંડીને પ્રધાનમંત્રી સુધીમાં જે એક વાતાવરણ ઊભું કર્યું એના જ કારણે એ આજે આપણા ધરતી પર આવ્યા છે. એમનું સ્વાગત પણ કરું છું અને એમને વિશ્વાસ પણ અપાવીએ છીએ કે આપ જે વિશ્વાસ લઈને અહીં આવ્યા છો એ આપનો વિશ્વાસ ચોક્કસપણે અકબંધ રહેશે અને આપની અનુકૂળતા કરવા માટે આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ એમણે તો ખાતરી આપી જ છે, પરંતુ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ પણ સતત ઇન્ડસ્ટ્રીને સપોર્ટ કરવાની ચિંતા કરતા હોય છે અને એના જ કારણે ગુજરાતમાં અને વિશેષ કરીને આ હજીરા વિસ્તારમાં જે ડેવલપમેન્ટ થયું છે એનું એક ઉદાહરણ છે. જે વિસ્તાર એક ખારપાટ ગણાતો હતો એ વિસ્તારમાં એક સ્વર્ગ થયું. એ વિસ્તારના લોકોને કામ મળ્યું, પણ સાથે સાથે દેશ માટે અત્યંત મહત્વનું હોય એવી પ્રોડક્ટ પણ અહીંયા બનવાની શરૂ થઈ અને એમાં એમએનએસ એનો ખૂબ મોટો ફાળો મને લાગે છે ગુજરાત માટે ગૌરવ થાય એ પ્રકારનો આજનો આ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, આજનો આ નવો પ્રયાસ એમનો રહ્યો છે. એમણે જે નવું સાહસ કર્યું છે, આ તો સાહસ એમના માટે તો નાનું હશે, એમનો દીકરો આદિત્ય જ આ તો સંભાળવાનો છે, પરંતુ આ સાહસને કારણે ગુજરાતમાં ખૂબ મોટું એક સારું વાતાવરણ નિર્માણ થશે. એના કારણે ઘણી બધી નવી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ પણ એના કારણે ડેવલપ થશે એવો મને વિશ્વાસ છે. ગુજરાત માટે અને દેશ માટે સુવર્ણકાળ છે એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. આજે જ્યારે એમએનએસની શરૂઆત થઈ રહી છે તે જ રીતે આવતીકાલે પણ બરોડાની અંદર 30 તારીખે એરબસના સીઓ આવવાના છે, ચેરમેન આવવાના છે અને ખૂબ મોટો એક નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સાથે લગભગ નવી બીજી 200 જેટલી ઇન્ડસ્ટ્રી એની સાથે આવશે. એરબસ ગુજરાતમાં બનશે એવી કલ્પના ક્યારે આપણે કરી નહોતી, એ કલ્પના પણ આપણા માટે સાકાર થવાની તૈયારીમાં છે. અને એટલા જ માટે ફરી હું નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનો પણ આભાર માનું છું કે ડેવલપમેન્ટ જે તમે શીખ્યું, વિકાસ જે શીખ્યો, ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર જે તમે ઊભું કર્યું, એના કારણે લક્ષ્મી મિત્તલ સાહેબ જેવા અનેક લોકો અહીંયા નવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લઈને આવ્યા, નવી ટેકનોલોજી લઈને આવ્યા. એના કારણે અનેક રોજગારો અહીંયા ઊભા થયા, અનેક નવી નાની મોટી ઇન્ડસ્ટ્રી ઊભી થઈ અને લોકોની સુખાકારી માટે એ ખૂબ મદદરૂપ થઈ છે. અમે આપ સૌનું સ્વાગત કરીએ છીએ અને આપણે વિશ્વાસ અપાવીએ છીએ કે જે વિશ્વાસ સાથે આપણે જે પૂરો થશે, આપણે કોઈ પણ પ્રકારની કનડગત અહીંયા ન થાય એની પણ આપણે ખાતરી સાથે મારી વાતને વિરામ આપું છું. જય જય ગરીબ ગુજરાત, ભારત માતા કી જય. તમારી શુભેચ્છાઓ માટે ખૂબ 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 આભાર. Next we have a leader, a visionary, a recipient of Padma Vibhushan and Forbes Lifetime Achievement Award, Executive Chairman of ArcelorMittal, a renowned global businessman from India who is known as the Steel King of the world. He has set a global benchmark by setting the largest steel company, an inspiration for so many of us. Also an active philanthropist who's engaged in the field of education and child health. I humbly request and invite Shri Lakshmi Mittalji, the Executive Chairman, ArcelorMittal, to please address the entire team and guests and friends of AMNS India. नमस्कार और दिवाली का अभिनंदन। और ये बहुत खुशी की बात है कि हम भारत की 75वीं आज़ादी मना रहे हैं और इस सुनहरे, इस बहुत महत्वपूर्ण मौके पे आज हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। वो
खुद नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने एक वीडियो मैसेज भेजा है जो अपने सुनेंगे आज और उनसे समझेंगे कि वो क्या बोल रहे हैं हमें। लेकिन आज इस प्लांट में मोदी जी की प्रेजेंस हमको बहुत लगी जब हम यहाँ आए थे और मैंने देखा कि कोल्ड रोलिंग मिल का उद्घाटन उन्होंने किया था। अब हम आशा करते हैं कि जब आप इस प्रोजेक्ट को चालू करेंगे तो मोदी जी जरूर आएंगे और प्रोग्रेस देखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। आप इतने व्यस्त हैं, मेरे को मालूम है कि गुजरात का इलेक्शन 2-4 दिन में ही अनाउंस होने वाला है और आपको बहुत कुछ करने का है और बहुत एमएलएज, भावी एमएलएज आपके पीछे लगे हुए हैं कि आप उनको सीट देवें। फिर भी आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा। भारत में जापान के दूतावास और मिशन के उप प्रमुख कावाजू सान का भी स्वागत है। यहाँ पे दर्शना बहन भी हैं जो मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल एंड रेलवेज हैं, जो गति शक्ति रेलवे आ रही है उनकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर में है। आज मैं उपस्थित सभी मंत्रियों और गण्यमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूं और मैं अपने जो पार्टनर्स हैं, कस्टमर्स हैं, वेंडर्स हैं, उन सब का भी स्वागत करता हूं और मैं सबसे ज्यादा अभिनंदन हमारे कर्मचारियों को देना चाहता हूं जो पीछे में बैठे हैं। आदित्य मित्तल ने बहुत कुछ बताया आप लोगों को इस प्रोजेक्ट के बारे में कि हम कैसे दुनिया का सबसे अच्छा स्टील बनाएंगे जो गति शक्ति ट्रेन में भी जाएगा और उसके अलावा अपने शिप्स में, न्यूक्लियर प्लांट्स में सब जगह उसका उपयोग होगा। मैं आगे आपको बताऊंगा। और उसने सबसे महत्वपूर्ण बात बोली कि हमें आप लोगों की सेफ्टी बहुत इम्पोर्टेंट है और आप सब उसका ख्याल रखेंगे। आज हम लोग गुजरात में हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने अपने सारे दरवाजे खोल दिए और उसमें गुजरात सबसे आगे है। आज मोदी जी ने लैंड रिफॉर्म किया, टैक्स रिफॉर्म किया, डिजिटल पेमेंट्स लेके आए, जीएसटी रिफॉर्म किया। इन सब से इजी टू डू बिजनेस को बहुत सपोर्ट मिला है। हम इस प्रोजेक्ट के लिए स्टील मिनिस्टर, इन्वायरमेंटल मिनिस्टर और गुजरात सरकार की बहुत सराहना करते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम जब से यहाँ आए हैं हमें सभी मंत्रियों का और बहुत स्पेशली भूपेंद्र भाई का बहुत सहयोग मिला है। अभी मैंने देखा कि गुजरात ने कोविड मैनेजमेंट जितना अच्छा किया है उसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। गुजरात हमेशा से ही बिजनेसमैन के लिए सबसे अच्छा राज्य रहा है। हमें इसके लिए सरकार के कर्मचारियों को, यहाँ पे काशीनाथन बैठे हुए हैं, कैलाशनाथन बैठे हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज दुनिया में मैं जहाँ भी जाता हूँ गुजरात को हमेशा ग्लोबल बिजनेस के लोग बहुत सराहते हैं और कहते हैं कि यहाँ उन्हें काम करने में बड़ा अच्छा लगता है।
और भूपेंद्र भाई ने इस प्रथा को जारी रखा है। आपकी जो नई स्कीम है, इंसेंटिव स्कीम, हमारे प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट को बहुत सहायता देगी, उसके लिए भी हम बहुत आभारी हैं। हम लोग यहाँ पे 60,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो खाली इस फेज में और आगे भी उसके अलावा बड़ा इन्वेस्टमेंट का प्लान है। और हम समझते हैं कि 60,000 आदमियों को जॉब मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसा आदित्य ने कहा कि हम मेक इन इंडिया आत्मनिर्भरता के लिए सारा प्रोजेक्ट को लगाएंगे। और जैसा मैंने सुना कि गति शक्ति में 100% आत्मनिर्भरता होगी और उसमें स्टील सारा हमारे देश का होगा। उसके अलावा हम इस कंपनी में इस अपने देश में, जैसा कि आपने सुना कि गुजरात नहीं उड़ीसा में भी इन्वेस्ट करेंगे। और सीआर पाटिल ने बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा काम संभाल रहा है तो इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो आगे बढ़ाएगा ही। मैं इन सब की वजह से मैं सोचता हूँ कि गुजरात में बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है जिसके लिए हम यहाँ पे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है और यही धारणा हमको यहाँ मौजूद रखेगी, बल्कि अभी से बड़े गहरे और सबके लिए लाभदायी मंसूबों के साथ मौजूद रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। इतनी सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के लिए और आने वाली योजनाओं पर एक लाइट डालने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए श्री लक्ष्मी मित्तल जी के लिए। थैंक यू सो मच once again for giving all of us this wonderful platform. We are here today because of you. The entire family is present over here because of you. Thank you so much. મિત્રો, આજે આપણા સૌનું સૌભાગ્ય છે કે ગુજરાતના વિકાસની કમાણ સંભાળનાર, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષામાં સર્વગ્રાહી ક્ષેત્રોમાં ગુજરાતને અગ્રેસર બનાવનાર ગુજરાત રાજ્યના વરિષ્ઠ નેતા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ આજે આપણી સમક્ષ અહીંયા ઉપસ્થિત છે. હું એમને નિવેદન કરીશ કે આજે એ સભાને સંબોધિત કરે. સુરત ખાતે આર્સેલરમિત્તલ નિપ્પોન સ્ટીલ ગ્રુપના હજીરા પ્લાન્ટના ભૂમિપૂજન સમારોહ પ્રસંગે આપણી સૌની સાથે ઉપસ્થિત આધુનિક ભારતના નિર્માતા, વૈશ્વિક નેતા, વિકાસ પુરુષ આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ, મારી સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અમારા પ્રદેશના અધ્યક્ષ અને નવસારીના સાંસદ श्री CR पाटिल जी, केंद्रीय मंत्री श्री दर्शनाबेन जरदोस, राज्य सरकारना मारा साथी मंत्री श्री मुकेश भाई पटेल, जापानना एम्बेसडर श्री कुनिहिको कावाजू, चेयरमैन श्री LN मित्तल, श्री आदित्य मित्तल, CEO श्री दिलीप ओमान, मारा साथी धारासभ्यश्रीओ प्रवीणभाई गोगारी, जंगनाबेन पटेल, मुख्य अग्र सचिव श्री के कैलासनाथन जी, उद्योग जगतना सौ अग्रणीओ, उपस्थित सौ अधिकारीगण, सौ कर्मयोगी भाईओ बहनों, प्रेस मीडियाना मित्रों, सौने मारा नमस्कार। नवा वर्षनी
ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને નૂતન વર્ષાભિનંદન. નવું વર્ષ બધા માટે સુખ સમૃદ્ધિ અને તંદુરસ્તી ભર્યું રહે તેવી પ્રભુ પ્રાર્થના. આપણે ત્યાં નવા વર્ષનું કંઈક નવું કરવાનો નવા સંકલ્પનો મહિમા છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી એવા વિઝનરી લીડર છે કે જે સંકલ્પ લે તે સાકાર કરે છે. તેમના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત પણ બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી અને પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ તરીકે બેસ્ટ ચોઇસ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બન્યું છે. આ જ દિશામાં આગળ વધતા ArcelorMittal અને Nippon સ્ટીલનો નવો પ્લાન્ટ સંકલ્પ સિદ્ધિનું વધુ એક કદમ છે. નવા વર્ષની શરૂઆતના દિવસોમાં જ જેનું ભૂમિપૂજન થઈ રહ્યું છે તે આ પ્લાન્ટ આત્મનિર્ભર ભારતની શ્રી નરેન્દ્રભાઈની નેમ સાકાર કરશે. આ નવા સ્ટીલ પ્લાન્ટનું ભૂમિપૂજન નવા વર્ષે એક પરફેક્ટ સ્ટાર્ટ છે. કંપનીના સંચાલકોને આ નવી શરૂઆત બદલ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. 3 વર્ષ પહેલા જેનો સંકલ્પ કર્યો હતો એ આજે સાકાર થઈ રહ્યું છે. આ નવા પ્લાન્ટથી 60,000 જેટલા રોજગારીની નવી તકોનું સર્જન થવાનું છે. સાથે સાથે ગુજરાતની સ્ટીલ ઉત્પાદન ક્ષમતામાં વૃદ્ધિ થશે અને સ્થાનિક યુવાનોને પણ રોજગારીની વધુને વધુ તકો મળશે. ઔદ્યોગિક વિકાસનો મુખ્ય આધાર જ સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ ઉપર રહેલો છે. ગુજરાત દેશમાં સૌથી વધુ ઔદ્યોગિકરણ પામેલું રાજ્ય છે. MSME અને મોટા ઉદ્યોગની બાબતમાં ગુજરાત અગ્રેસર તો છે જ, પણ MSMEની સંખ્યા ડબલ એન્જિન સરકારના પ્રોત્સાહનને પરિણામે આજે 8.66 લાખે પહોંચી છે. 2 દાયકા પહેલા ગુજરાતનું ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન જે વર્ષે માત્ર 1.25 લાખ કરોડ રૂપિયા જેટલું હતું, આજે એ ઔદ્યોગિક ઉત્પાદન રૂપિયા 16 લાખ કરોડથી પણ વધારે થયું છે. તેમાં આપણી સ્ટીલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝનું કુલ રૂપિયા 70,000 કરોડનું ટર્નઓવર આની અંદર મોટો ફાળો આપે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના નેતૃત્વમાં ગુજરાતે ઔદ્યોગિક આર્થિક પ્રગતિનો જે રાહ કંડાર્યો છે તેમાં એક સીમાચિહ્ન છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ આત્મનિર્ભર ભારતનો કોલ આપ્યો છે. ખાસ કરીને સ્ટીલ ઉત્પાદન ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનવા ઉપર તેમણે વિશેષ ભાર મૂક્યો છે. આપણું લક્ષ્ય આત્મનિર્ભર ગુજરાત થકી આત્મનિર્ભર ભારતનું છે. ગુજરાત સ્પેશિયાલિટી સ્ટીલ અને ગ્રીન સ્ટીલના ઉત્પાદન અને નિકાસમાં મોખરાનું રાજ્ય બને તેવી સરકારની નેમ છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીના માર્ગદર્શનમાં ગુજરાત પોલિસી ડ્રીવન સ્ટેટ બન્યું છે. ગુજરાતે તેના નેતૃત્વમાં વિવિધ પોલિસીઝના નિર્માણ કરી તેનું સફળ અમલીકરણ પણ કર્યું છે. તાજેતરમાં જ રાજ્ય સરકારે ઘણી બધી પોલિસી, જેમાંની કે સેમિકન્ડક્ટર પોલિસી, ડ્રોન પોલિસી, ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ પોલિસી, બાયોટેકનોલોજી પોલિસી, IT એન્ડ ITS પોલિસી, સોલાર પોલિસી જેવી અનેક બિઝનેસ ફ્રેન્ડલી નીતિઓ અમે ગુજરાત સરકારે બનાવી છે. વડાપ્રધાનશ્રીએ ગુજરાતમાં વાઇબ્રન્ટ સમિટના આયોજનથી એક આગવી પરંપરા સ્થાપી છે. આ સમિટની ઉત્તરોત્તર સફળતાને પગલે દેશ અને વિદેશના ઉદ્યોગકારોએ ગુજરાતમાં પ્રોડક્શન મેન્યુફેક્ચરિંગ શરૂ કર્યું છે. ગુજરાત દેશનું ગ્રોથ એન્જિન છે અને વિદેશ મૂડીરોકાણની બાબતમાં પણ ગુજરાત સૌથી પ્રથમ પસંદગીનું રાજ્ય હર હંમેશ રહ્યું છે. ગુજરાતનો ઔદ્યોગિક વિકાસ અને માનાંકનો માપદંડો પર સર્વોત્તમ સાબિત થયો છે. ઇઝ ઓફ ડુઇંગ બિઝનેસ રેન્કિંગ અને એક્સપોર્ટ પ્રિપેર્ડનેસ ઇન્ડેક્સમાં પણ ગુજરાત સરકાર મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. લોજિસ્ટિક ઇઝ લીડ ઇન્ડેક્સ અને સ્ટાર્ટઅપ ફ્રેમવર્કમાં પણ ગુજરાત સતત 4 વર્ષથી પ્રથમ ક્રમ મેળવી રહ્યું છે. દેશનો 6% ભૂમિ ભાગ અને 5% વસ્તી છે, છતાંય દેશના GDPમાં 8%થી વધુનું યોગદાન ગુજરાત આપે છે. વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ ધોલેરા સ્તર, દિલ્હી મુંબઈ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોર,
સુરતનું ડ્રીમ સિટી અને ડેડિકેટેડ ફ્રેટ કોરિડોર વગેરેથી ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસને વૈશ્વિક બનાવવાનો સંકલ્પ કર્યો છે. એ સંકલ્પમાં આ નવો સ્થપાનારો સ્ટીલ પ્લાન્ટ અંદાજે કીધું એમ 60,000 કરોડના રોકાણ સાથે નવું બળ આપશે એવો મને વિશ્વાસ છે. વડાપ્રધાનશ્રીના નેતૃત્વમાં આપણે ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસમાં હજી નવા આયામો ઉમેરવા છે. આજના પ્રસંગે તેમનું વિશેષ માર્ગદર્શન પણ આપણને મળવાનું છે. આપણે સૌ સાથે મળી ગુજરાતના ઔદ્યોગિક વિકાસને આમ જ ગતિમાન રાખીએ. હરેક ક્ષેત્રે ગુજરાતને વધુને વધુ અગ્રેસર બનાવવા નવા વર્ષે સૌ સંકલ્પબદ્ધ થઈએ. નવા સ્ટીલ પ્લાન્ટના ખાતમુહૂર્ત બદલ ફરીથી સૌને અભિનંદન પાઠવી વિરમું છું. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. તમારી શુભેચ્છાઓ અને બધાઈઓ માટે ખૂબ ખૂબ આભાર અને તમે આજે તમારો કિંમતી સમય કાઢીને અમારી સાથે જોડાયા આ શુભ અવસર પર એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર. એક વખત ફરીથી મોટેથી તાળીઓ સાથે આપણે સ્વાગત કરીએ છીએ અને આભાર પ્રકટ કરીએ છીએ श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी नो. અને જેમ કે जैसा कि उन्होंने कहा आज पूरा विश्व हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप का लोहा मान रहा है. आपका विजन है ये, आपके विजन का परिणाम है ये कि भारत आज $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरह उस तरफ पर अग्रसर से बढ़ रहा है. मेक इन इंडिया के आपके स्वप्न से ही आज भारत विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ कदम बढ़ा रहा है. आज एक नई नींव रखी जा रही है प्रगति की ओर, और हम सबको प्रगति की ओर नए भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करने वाले और कोई नहीं हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी है. आगे बढ़ते हुए मैं हमारे लोकप्रिय यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचारों से हमें प्रेरित करें. स्वागत है भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का. નમસ્કાર. આપ સૌને દિવાળીની અને નવા વર્ષની અનેક અનેક શુભકામનાઓ. નવા વર્ષમાં આજે ટેકનોલોજી દ્વારા તમને બધાને મળવાનું થઈ રહ્યું છે. નવા વર્ષ આપનું ખૂબ સુખ શાંતિ અને સમૃદ્ધિવાળું જાય એવી સૌ ગુજરાતના મારા વાલા ભાઈઓ બહેનોને માટે હું प्रार्थना करूं છું. आप सभी को आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के हजीरा प्लांट का विस्तार होने पर बहुत बहुत बधाई. इस स्टील प्लांट के माध्यम से सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा है, बल्कि भविष्य के लिए नई संभावनाओं के अनेक द्वार भी खुल रहे हैं. 60,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश गुजरात और देश के युवाओं के लिए रोजगार के अनेक अवसर बनाएगा. इस एक्सपांशन के बाद हजीरा स्टील प्लांट में क्रूड स्टील के उत्पादन की क्षमता 9 मिलियन टन से बढ़कर 15 मिलियन टन हो जाएगी. ये लक्ष्मी मित्तल जी को, भाई आदित्य को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, अमृत काल में प्रवेश कर चुका हमारा देश अब 2047 के विकसित भारत के लक्ष्यों की ओर बढ़ने को आतुर है. देश की इस विकास यात्रा में स्टील इंडस्ट्री की भूमिका
और सशक्त होने वाली है, क्योंकि जब देश में स्टील सेक्टर मजबूत होता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर मजबूत होता है। जब स्टील सेक्टर का विस्तार होता है तो रोड, रेलवे, एयरपोर्ट और बंदरगाह का विस्तार होता है। जब स्टील सेक्टर आगे बढ़ता है तो कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव सेक्टर में नए आयाम जुड़ जाते हैं, और जब स्टील सेक्टर की क्षमता बढ़ती है तो डिफेंस, कैपिटल गुड्स और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स के विकास को भी नई ऊर्जा मिलती है। और इतना ही नहीं, आज तक हम आयरन ओर एक्सपोर्ट कर ही संतोष मानते थे। आर्थिक विकास के लिए हमारी जो भू संपदाएं हैं उसका वैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है, और इस प्रकार के स्टील प्लांट के विस्तार के कारण हमारे आयरन ओर का सही इस्तेमाल हमारे देश में होगा। देश के नौजवानों को बहुत रोजगार मिलेंगे और विश्व बाजार में भारत का स्टील एक अपनी जगह भी बनाएगा। और मुझे बताया गया है कि ये सिर्फ प्लांट के विस्तार की ही बात नहीं है, बल्कि इसके साथ भारत में पूरी नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है। ये नई टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, अन्य मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में बहुत मदद करने वाली है। मुझे विश्वास है कि आर्सेलर निप्पॉन स्टील इंडिया, उनका ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के विजन के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये स्टील सेक्टर में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के हमारे प्रयासों को नई ताकत देगा। साथियों, आज दुनिया हमारी तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, और सरकार इस सेक्टर के विकास के लिए आवश्यक पॉलिसी एनवायरनमेंट बनाने में तत्परता से जुटी है। मैं गुजरात सरकार को भी बधाई देता हूं कि भूपेंद्र भाई पटेल के नेतृत्व में जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है वो भी गुजरात को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बहुत ही दूरदृष्टि वाली वो पॉलिसी है। पिछले 8 वर्षों में सभी के प्रयासों की वजह से भारतीय स्टील इंडस्ट्री दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील उत्पादक इंडस्ट्री बन गई है। इस इंडस्ट्री में विकास की अपार संभावनाएं हैं। सरकार की पीएलआई स्कीम से इससे विस्तार के नए रास्ते तैयार हुए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिली है। इससे हमने हाई ग्रेड स्टील के उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने में दक्षता हासिल की है। इस हाई ग्रेड स्टील का इस्तेमाल क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में भी बढ़ गया है। आपके सामने आईएनएस विक्रांत का उदाहरण है। पहले हम एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाली स्टील के लिए दूसरे देशों पर निर्भर थे। देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए हमें दूसरे देशों की मंजूरी की दरकार होती थी। ये स्थिति ठीक नहीं थी। इसे बदलने के लिए हमें आत्मनिर्भर बनने की जरूरत थी, और भारतीय स्टील इंडस्ट्री ने
नई ऊर्जा के साथ इस चुनौती को स्वीकार किया। इसके बाद डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने वाले खास स्टील को विकसित किया। भारतीय कंपनियों ने हजारों मीट्रिक टन स्टील को प्रोड्यूस किया और आईएनएस विक्रांत पूरी तरह से स्वदेशी सामर्थ्य और तकनीक से तैयार हो गया। ऐसे ही सामर्थ्य को बढ़ावा देने के लिए देश ने अब क्रूड स्टील की उत्पादन क्षमता को 2 गुना करने का लक्ष्य तय किया है। अभी हम 154 मिलियन टन क्रूड स्टील का उत्पादन करते हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले 9-10 साल में हम बढ़कर के 300 मिलियन टन उत्पादन की क्षमता हासिल कर लें। साथियों, जब हम विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ चुनौतियों का भी ध्यान रखना होगा। स्टील इंडस्ट्री के लिए कार्बन उत्सर्जन, कार्बन एमिशन ऐसी एक चुनौती है। इसलिए एक तरफ तो हम क्रूड स्टील के उत्पादन की क्षमता का विस्तार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल को बढ़ावा भी दे रहे हैं। आज भारत ऐसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज विकसित करने पर बल दे रहा है जो न सिर्फ कार्बन का उत्सर्जन कम करे बल्कि कार्बन को कैप्चर कर उसका दोबारा इस्तेमाल भी करे। देश में सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि एएमएनएस इंडिया ग्रुप का हजीरा प्रोजेक्ट भी ग्रीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर बहुत बल दे रहा है। साथियों, जब किसी लक्ष्य की दिशा में पूरी ताकत से हर कोई प्रयास करने लगता है तो उसे साकार करना मुश्किल नहीं रह जाता। स्टील इंडस्ट्री को नई बुलंदियों पर ले जाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुझे विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट पूरे क्षेत्र और स्टील सेक्टर के विकास को रफ्तार देगा। मैं एक बार फिर एएमएनएस इंडिया की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके इन शब्दों से हमें एक नया उत्साह और जोश मिलता है। आपके हर शब्द से प्रेरित होकर हर देशवासी नए भारत के निर्माण में अपने योगदान के लिए जुट जाता है। पूरा देश विकास के मार्ग पर चलकर निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हम सबको ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहने के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं हम सभी की तरफ से। And with this, we've almost come towards the end of the lovely afternoon, and I would request the CEO, AMNS India, Mr. Dilip Oman, to please join us and express a few words of gratitude to all the audiences and dignitaries present over here. On this gracious occasion, it gives me immense pleasure to thank our Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, for joining us live, for joining us virtually for this Bhumi Pujan ceremony. I would also like to thank Honorable Chief Minister, Government of Gujarat, Shri Bhupendra Patel ji, Honorable Union Minister of Steel, Shri Jyoti Aditya Scindia, Honorable Member of Parliament and
State BJP President, Shri C.R. Patil, Srimati Darshana Jardosh, Shri Mukesh Patel, Honorable Ambassador, Janka Benji, and the one and only pillar of Gujarat bureaucracy, none other than Shri Kailashnath ji. I would also thank all the other dignitaries who are present on and off the stage, and everyone who has joined us physically as well as virtually. I will end by saying, Jai Jai Garvi Gujarat. Can you all repeat after me? Jai Jai Garvi Gujarat. Jai Hind. जय जय गर्वी गुजरात। देवियों और सज्जनों, आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्र गान के लिए। I would request everybody in the audience to please rise for the national anthem. इसी के साथ आज एक नई शुरुआत है। विशिंग मोर प्रॉस्पेरिटी एंड सक्सेस टू द एंटायर टीम ऑफ AMNS India. I invite all the guests to please join us for high tea. This is your host, Lippy Goyal, signing off. Thank you.